70 meter. That's when you get the clear vision, 360-degree vision. You can see what is. Namaskar. My name is Parthu Mitra and you are watching Overlander. We have noticed that there is a growing popularity of self-driven long-distance road trip. It is imperative that we follow some basic of highway drive to ensure safety of ours and all our fellow drivers. आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे which I thought will be helpful for beginners. One of that is tailgating, whether we should do that. If not, why we should not do that. Second thing is what we should do if we encounter an animal on our path. So we will talk about these two topics. I'm hopeful that it will be beneficial for the newcomers. When we are cruising on a highway at say between 90 to 100 or maybe more, then the minimum distance we should maintain from the car ahead of us at least 70 meter. That's when you get the clear vision, 360-degree vision. You can see what is coming. You can keep and watch an oncoming vehicle. You can see what is coming behind you. Then you are in a safe zone and can drive. But if you are tailgating, like the one I'm doing right now to show you what is tailgating, you will see my vision will narrow down to very, very less. This is what is called tailgating. Now see, I can't see anything. If some car is coming from the front and I try to overtake, there is a possibility that I have to slam the brake to stop the vehicle, to take the vehicle away from the path of the oncoming car. There is every possibility कि हम जिस गाड़ी के पीछे हम चल रहे हैं उसको ठोक दें या ऑनकमिंग व्हीकल को ठोक दें, क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे क्या है. इसीलिए 70 मीटर का फासला रखना चाहिए आगे हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है उससे, ताकि हमें पूरी दिखाई दे. अगर ऐसा ना करे तो दिक्कत होगा. पॉसिबली we will end up with an accident, God forbid, and that could be fatal also. So जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, ये जरूर ध्यान पे रखिए कि टेलगेटिंग करना बिल्कुल नहीं है unless it is absolutely necessary. बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाना is detrimental. It can be fatal to you. So जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, कृपया इस बात की ध्यान रखिए कि आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी मत चलाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहे और सुरक्षित अपना घर पहुंचे. कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. सो ये सावधानी आप बरतिए कि 70 मीटर की फासला बना के चलिए, ताकि हमें सामने का गाड़ी भी दिख रहा है, उसके आगे गाड़ी भी दिख रहा है. देखिए अब मेरे सामने जीप है, लेकिन उसके आगे एक ट्रक है, वो भी दिख रहा है मुझे, पेट्रोल टैंकर. वो टैंकर भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग दैट गैप. आप में से कोई हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, टेलगेटिंग वन ऑफ द
major cause of accident across the world. So please keep this in mind. लाइव एक्सीडेंट है Cattle are freely roaming on our highways or expressways is a very common thing. And their appearance also unpredictable. आपको पता नहीं कब वो रास्ते के बीच में आ जाएंगे. Keeping that in mind, it is better that we drive in the middle lane so that even if animal appears from your left or right, you still get some time to decide what to do. So it is better that we take the middle path. So what we should do when we are driving at a high speed and encounter a stray cattle in the middle of the road? Don't swerve the car to save the animal or slam the brake. In both the cases, your life will be in danger. If you slam the brake, there is a possibility that the car behind you will come and hit. If you swerve the car, it might topple. In both the cases, your life will be in danger. Hold the steering firmly with your both hand and try to slow down the car by applying brake. धीरे धीरे ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश कीजिए. So try to slow down your car and swerve at the last moment. Steer at the last moment. You might be able to manage or escape the accident. Please note, whatever I have said in this video are my personal opinions. These are not to be treated as norms. Please follow traffic rules of the respective authority. आज का ये छोटा सा वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे.